Assalamu alaikum. My name is Saira Khan. Here I'm making a video on the data science. Nabiha Noor and Rabia Ashfaq डायरेक्टली एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पर अपनी फाइल्स का पाथ लिखने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जुपिटर ऑटोमेटिकली हमारी सारी फाइल्स को रीड कर लेता है। वो उस मॉड पर आ जाती हैं या उस जगह पर आ जाती है जहाँ पे हमें अपनी एक्चुअल वर्किंग करनी होती है। फ्रॉम हियर वी विल गो टू द पाइथन 3। एज यू कैन सी, जैसे हमने वहाँ अपना एड्रेस कॉपी किया था, जुपिटर ने हमारे सामने वो सारी की सारी फाइल्स ला के रख दी। नाउ वी कैन वर्क easily on it. Now here, for the dataset, we are working on a dataset to analyze uh, or to find out some useful things from it. हमने एक सेल्स डेटा लिया है किसी एक रैंडम कंपनी का, और हमें यहाँ पे ये देखना है अपने इस डेटा सेट के अंदर कि क्या क्या यूजफुल रिस्पेक्ट्स हैं इसके। हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद है 5 मंथ्स का, तो उस 5 मंथ्स के रिकॉर्ड से हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। डेटा साइंस से हम किसी भी कंपनी का, किसी भी डेटा का, किसी भी जगह का, कि उसकी परफॉर्मेंस पूरे साल में कैसी रही, पूरे मंथ में कैसी रही उसकी परफॉर्मेंस, क्या चीज़ उसके ज़्यादा सेल आउट हुआ है, कहाँ पे उसको सम वेरिएशंस लाने की ज़रूरत है, कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। इफ द पर्सन वांट्स टू ओपन अ ब्रांच समवेयर, तो विच सिटी और विच रीजन इज बेस्ट फॉर हिम। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स वी आर यूजिंग अ जुपिटर, और यहाँ पे हमें डेटा साइंस इसी चीज़ में हेल्प दे रहा होता है कि हम इन सब चीज़ों को ईजिली फाइंड आउट कर सकें। बिकॉज अगर हम इसको मैनुअली करने बैठेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक इट विल टेक अ मंथ और इट विल टेक अ मोर देन मंथ। हम इसको एक्सेल भी करेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। but by doing this, by doing the coding, it will done in 1 and 2 hours. If the person is expert, then the person can do it in half hour only. Here we are importing our some libraries, like import pandas as pd. After writing, I'll explain what are the purposes of these libraries. Here the pandas library. The pandas library is used to do the data manipulation and do the analysis. हम हमारे पास जो भी डेटा मौजूद है उसमें हमने जो भी डेटा मैनिपुलेशन करनी है, जो भी एनालाइज करना है, वो हम थ्रू pandas लाइब्रेरी यूज करेंगे। थ्रू द numpy लाइब्रेरी, नम्पाई लाइब्रेरी जो है हमें हेल्प करता है हमारे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए। थ्रू द नम्पाई लाइब्रेरी वी कैन डू द स्टैटिस्टिकल्स ऑपरेशंस, वी कैन डू द algebraic operations, any kind of mathematical operation we can do by the numpy library. Matplotlib, we use this library to plot our graphs, like if we have a lot of data, so we can draw a graph by the matplotlib library. Import Seaborn. Seaborn is a library which is help to understand and explore data. And the last one is import OS. OS is a library which provides a function. Like here, we are using a path function of OS library, and through this we will interact with our file system. Let's run it. Here, our next step is to read our files here. Here I'm making a variable with the name of path, and I'll copy my path here. In inverted commas, I will copy paste my problem here. Here I copy my path. हमारे पास जितनी भी फाइल्स हैं, whatever we have through this code, हमारे सामने सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी. Let's try to run it. No, it's not
reading it. If there's any problem while reading up files, you can put R here with your address of file. एज यू कैन सी हमारे पास सारी फाइल्स ही सामने आ गई हैं और हमारा जो जुपिटर फाइल है जिसका नाम आई पाई एन बी के नाम से आ गया है यहाँ पे. Our next step is to make all the files, create all the files in one file. हमें सारी फाइल्स को एक जगह में सबमिशन करना है ताकि हमारे पास, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू वर्क ऑन द सेपरेट फाइल्स. अगर हमारी सारी की सारी फाइल्स एक जगह पे जमा हुई हुई है, देन वी कैन वर्क ऑन इट वेरी इजीली. Here we are creating a variable. File for file in os.list.dir. Through this function हमारा जो जुपिटर है ये बैक साइड पे जाएगा, अपने पाथ के वेरिएबल में जाएगा जो हमने लास्ट टाइम इसको दिया था. यहाँ से अपने फंक्शन को रीड करेगा. उस पर लिखा कि इफ द फाइल, जो फाइल स्टार्ट नहीं हो रही है डॉट के साथ, ये उनको रीड यहाँ पर नहीं करेगा. इन द नेक्स्ट स्टेप हमने एक वेरिएबल असाइन किया है ऑल डेटा के नाम से. Again, we are assigning a variable for file in files. हमारे जो भी रॉ डेटा, जितना भी डेटा मौजूद है, we will call it a raw data. Here जितने भी हमारे पास रॉ डेटा की फॉर्म में डेटा एक मौजूद था, हमने उसको रीड करवाया है. पी डी डॉट रीड सी एस पी करके. इस पर क्या होगा, ये अपना एक लूप कंप्लीट करेगा कम्प्लीटली तौर पे. लाइक वो फर्स्ट फाइल पे आएगा. द फर्स्ट फाइल वी हैव इज अप्रैल फाइल. ये अपनी अप्रैल की फाइल पे आएगा. एंड आफ्टर कमिंग ऑन द अप्रैल फाइल ये अपने पाथ में जाएगा. एंड देन ये अपना पूरा एक लूप कंप्लीट करेगा. लाइक अपना लूप घूमेगा, अप्रैल पे आएगा, देन ये फैब पे आएगा, देन जैन पे, देन मार्च में. सारी ये सारी फाइल्स को यहाँ पर आके रीड करने की कोशिश करेगा. After that, here we are trying to merge our file on one place with the function of pd dot concate. हमने अपने वेरिएबल का जो भी नाम असाइन किया हुआ है, हम यहाँ पे अपना वो नाम लिखेंगे. और हमने अपने पुराने जो असाइन किया था उसको हमने रॉ मटेरियल फाइल. यू विल राइट द नेम हियर. Whenever we are writing the index, make it sure that we have to write the first T or F of false, capital X 0. अब जब हमने फॉर फाइल्स एंड फाइल्स का फंक्शन बनाया था, इससे ये होगा कि जो भी फाइल होगी ये पहले इक्वली सेपरेटली हर फाइल को रीड करेगा. आफ्टर रीडिंग द एवरी फाइल ये सारी फाइल्स को एक जगह पे क्रिएट कर देगा, जमा करेगा. एंड देन हमारी फाइल इन द एंड ऑल डेटा के नाम से क्रिएट हो जाएगी.
Let's try to run it. It's giving an unmatch. Let's find out what's the error here. जी, तो हमने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट की मिस्टेक दे दी थी जिसकी वजह से ये हमारी फर्स्ट लाइन को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा था एंड बिकॉज ऑफ सिंटेक्स एरर हमारी रन नहीं हुआ था. आफ्टर ट्राइंग टू रन इट, what error it give? Pandas has no attribute to data frame. Let's see what mistake we have done here. Okay, like here we don't need to mention this. Let's try to run it. Now again it gives another error. The mistake which I did here in line number 4 is I was writing and coding D. So there is no need to write END, just write EN. Now let's try to run it. Again, it give an error. Oh, on the back side there's a one file. After deleting this file, hope so it will not show this error. Again, it gives an error. Oh, it's a slight spelling mistake. Again, go back to the file, delete the one file from here, then it will hope to run. Now it's run. Before working more, first we have to know in which type of value we have. The variable which we assign, we will write the same variable here with the info to look at. Like here we have a price and total, say the amount in floating, and only the quantity here we have it in integers. Our next step is to convert the price and total sales amount into the numeric, into numbers. So the thing which we are going with, हमने अपने डेटा का जो नाम था, जो फाइल हमने क्रिएट की है, हमने उसका नाम जो है ऑल डेटा साइन रखा है. सो वी विल यूज द सेम नेम इन एवरी फंक्शन वेयर एवर वी वांट टू डू समथिंग विद दिस डेटा. मेक इट श्योर हमारे डेटा में जिस तरीके से भी चीज़ लिखी हुई है, वेर इट्स कैपिटल और स्मॉल, हमें उसी हिसाब से लिखना होगा, अदरवाइज इट विल नॉट रीड इट. All data price. We will copy the same line there, and here we will just write total sale amount. Same thing here we will do. Again, it gives an error. Name price. Okay. यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसमें प्राइस का पी कैपिटल है, बट हियर बाय मिस्टेक आई रोट total sale amount. Here I wrote small a. Now it's run. Let's on the next step here I'm trying to change my order date into date time, because by changing the order date into a string or into something else, it can create a problem for me. That's why I'm changing here my all order date into date time.
p dot to numeric. Sorry, we are changing here into date time. p dot to date time. हम किस फाइल पे काम कर रहे हैं, यानी वर्किंग में ऑल डेटा फाइल, हम ये ऑल डेटा फाइल को मेंशन करेंगे। अभी ऑल डेटा फाइल के अंदर से किस पे हमें काम करना है, हमें ऑर्डर डेट के अंदर काम करना है। अच्छा कि हम मिस्टेक ना करें उधर। डॉट टी टाइप। अगेन वी मेड a mistake, yes here हमें डेटा का डी स्मॉल लिख दिया है। हमसे हमें इसने फर्स्ट डेट टाइम में चेंज कर लिया। अब हमें इसने बता दी भाई कि इसकी जो ऑर्डर डेट है इसकी कौन सी टाइप है। ऑन द नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे एक और चीज़ करने जा रही हूँ कि मैं जो भी ऑर्डर डेट में डे मंथ ईयर था, मैं उसको कम्प्लीटली इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे डेट टाइम में चेंज कर रही हूँ। हेयर मैं यहाँ पे जो हमारे पास आवर्स मिनट सेकेंड्स होते हैं वॉट एवर वी हैव, मैं उन सब को भी मैं यहाँ पर डेट टाइप फॉर्मेट में चेंज कर दूंगी। और डेटा हम सारी वर्किंग जो कर रहे हैं ऑर्डर डेट के अंदर कर रहे हैं, तो हमें इन एवरी लाइन वी हैव टू मेंशन इट एट वेयर वी आर डूइंग दिस वर्क। I'll copy it. हमने फर्स्ट में डे को मेंशन किया है। इन द सेकंड वन वी आर गोइंग टू मेंशन हियर अ मंथ। हम दोनों साइड पर चेंजिंग्स करेंगे जहाँ जहाँ भी हमने इस तरह किया है। देन वी आर वर्किंग ऑन एयर। And then we are working on minutes. And in the last, we will do the work on hour. Let's run it. Now we want to see our data in which form we have our data right now. Now you can see that here now we have a data, a complete order date into a date time. हमारे पास जो भी order date थी, we make a separate column for a day, month, year, minute and hours. As you can see हमारे सब चीज़ जो है उसमें change हो गई है. Now it's time to do the comparison in our data. We do the comparison in our data to see how much affected things we have and what variations we can do more here. Before doing the comparison, here I did realize I did a mistake. जब हमने सारी फाइल्स को एक जगह पे कनेक्ट किया था, सब फाइल्स को एक जगह पे जमा करने के बाद the thing which we have to do is to find out how many null values we have in our data. So those values जो हमारे डेटा में एक्स्ट्रा है, जिनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम उसको डेटा में यूज़ कर सकें या किसी भी फ़ायदे में चीज़ आए, तो हम उसके लिए यहाँ पे जी, तो हमने यहाँ पे अपना डेटा को एक जगह जमा करने के बाद अपना नल डेटा हमें सारा का सारा डिलीट करना था। नल डेटा से क्या होता है, हमारे पास जो भी नल वैल्यूज़ होती हैं वो एट द एंड
कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उसमें। वैसे ये भी हो सकता है कि हमारा ठीक से डेटा परफॉर्म ना कर पाए हम लोग। तो फॉर दिस पर्पज वी आर हेयर trying to delete all null data. Where we are now. Or data dot any किसी भी एक्सेस पे कोई भी ऐसी वैल्यू मौजूद है नल वैल्यू, तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमें आगे अपने डेटा को परफॉर्म करने के लिए डेटा के साथ कुछ भी चीज़ कर रहे होंगे उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। डिस्प्ले ndf डॉट हेड इस वाले फंक्शन को लिखने से इस तरह होगा कि हमारे जो भी नल वैल्यूज होंगे हमारे सामने आ जाएंगे। लाइक लुक वी डोंट हैव एनी नल वैल्यू हियर, but for the safe side here I am deleting all the none values. All data is equals to all data dot drop. Now drop now is a function. Through this function we can delete all null values. Oh, it gives an error like drop now. It's over here. Again. Let's see what problem we have done here. Oh, you have to put it into commas. Now as you can see हमारा जो है यहाँ पे ये रन हो गया, इससे सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज थी उसने उसको कट कर दिया है। Now coming back to our कंपैरिजन, इन दिस कंपैरिजन हम अपने पास जो भी डेटा मौजूद था हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं चीज़ों के हिसाब से। लाइक के फॉर एग्जांपल हेयर आई वांट टू सी कि मेरे किस रीजन में सबसे ज़्यादा जो है वर्किंग हुई है, फिर किस रीजन में जो है मेरी चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। अगर हम अपना डेटा देखें यहाँ पे नीचे जाकर तो हमारे पास रीजन में ईस्ट एंड वेस्ट दिया हुआ है, हमें लोकेशन दी हुई है। नाउ हियर आई वांट टू नो कि इन विच रीजन मेरे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं। फॉर दिस हियर आई एम यूजिंग a library of cborn library dot set स्टाइल इज इक्वल्स टू डार्क ग्रेड। हम यहाँ पे इसका स्टाइल जो दे रहे हैं जिस टाइप का हमें चाहिए हमने यहाँ पे डार्क ग्रेड दे दिया है। ऑन द नेक्स्ट लाइन अब मैं इसको किस हिसाब से असाइन करना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे वो लिखूंगी। I didn't close the commas. मैं इसको रीजन के नाम से असाइन करना चाह रही हूँ। cns डॉट काउंट प्लॉट, हमें काउंट प्लॉट देखना है कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा हुई है। सो फॉर दिस पर्पस वी आर यूजिंग हियर अ काउंट प्लॉट। ऑन द एक्स एक्सिस आई एम पुटिंग हियर अ रीजन। आफ्टर दिस हमें कौन से डेटा में से ये निकालेगा इसके लिए हमने अपना डेटा प्रोवाइड किया कि हमने जो भी ऑल डेटा का किया था उसके लिए उसमें से ये सारा हमें निकालना है। डॉट सेट हम अपने इसको क्या टाइटल देना चाहेंगे हम वो नाम मेंशन करेंगे। हेयर द टाइटल व्हिच आई एम गिविंग हियर इज डिमांडिंग रीजन। Oh, in every line is giving continuously error.
here ये region को recognize नहीं कर पा because in our data region R was written capital. Dot set title. I wrote a wrong spelling. Now एज यू कैन सी इसने हमें डिमांडिंग रीजन दे दिया है कि हमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट की सेलिंग हुई है वो हमारे ईस्ट में सेलिंग हुई है. इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सी साइड है जहाँ पर हमारी सेलिंग ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर हम अपना किस रीजन में हमें जो है अपना ज़्यादा पुटअप देने की ज़रूरत है, किस रीजन में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है कि वहाँ पे भी हमारी डिमांडिंग या हमारा जो वहाँ पे भी बिजनेस है वो अच्छे से रन हो. आई एम कॉपिंग द सेम थिंग हियर अगेन. But now here I want to open my branch somewhere, but I don't know here where I should. For this purpose मैं यहाँ पे comparison करूँगी और comparison से मुझे ये पता चलेगा कि कौन सा ऐसी इलाका है जहाँ पर मेरे प्रोडक्ट सेलिंग ज़्यादा हो रही है, जो चीज़ मेरे मेन हेड बन सकता है न्यू ब्रांच के लिए. सो फॉर दिस पर्पज मैं यहाँ पे लोकेशन, हमारे पास एक लोकेशन के नाम से कॉलम है हमारे पास डेटा में, मैं उसको सेलेक्ट कर रही हूँ. यहाँ पे हमें अपनी लोकेशन चेक करनी है, कौन सी लोकेशन में सबसे ज़्यादा हमारा बिजनेस रन हो रहा है. तो यहाँ पर मैं लोकेशन को सेलेक्ट किया है एक्स एक्सिस पे, एंड द टाइटल विच आई एम गिविंग हियर इज लोकेशन सिलेक्शन. अब यहाँ पे मुझे आइडिया हो गया, ये सबसे ज़्यादा जो हमारी सेल हुई है वो हमारे पास जो है न्यूयॉर्क में हुई है, the green one bar. Now I can open my new branch, a new office there easily. In the next comparison, here I want to select the best person for my new branch. फॉर दिस पर्पज़ हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं. हमें देखना है कि हम किस इंसान को यहाँ पे सेलेक्ट करें, हु इज़ द बेस्ट फॉर दिस सीट. अब हमें बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, किसको सेलेक्ट करना है, दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. तो फॉर दिस पर्पज हमें सबसे पहले सबकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है ड्यूरिंग द होल मंथ या ड्यूरिंग द होल ईयर, किसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है. सो फॉर दिस ऑन द एक्स एक्सिस आई एम राइटिंग अ सेल रिप्रेजेंटेटिव. सेल रिप्रेजेंटेटिव वो लोग होते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट्स को आगे सेल आउट कर रहे होते हैं. Okay. The title which I am giving here is a manager selection. The problem here is sale representative. By mistake I wrote here a capital small r, and I have to write here the capital one. We all have to be very careful. Sale represent, I think so there is a mistake here. Let's see what mistake I've done here. Here it's giving an error in the sale representative. Let's go back and copy the sale representative from here. Paste it here. Now, अब जब सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिसने काम किया है, the person name was Bearer, I think so. जो ग्रीन बार हमें दिया हुआ है, हम इससे पता चल रहा है कि भाई ये जो बंदा है इससे सबसे ज़्यादा सेल किया है हमारे प्रोडक्ट की, सबसे ज़्यादा इसने हमारे बिजनेस को आगे किया है उस ब्रांच में. तो यहाँ पे हमें आसानी हो जाएगी कि हमने अपना एक रीजन सेलेक्ट कर चुके हैं, हम लोगों ने अपना एक कहाँ पे अपनी न्यू ब्रांच न्यू हेड ऑफिस खोलना है, हमने वो भी सेलेक्ट कर लिया है. वहाँ पर हमें किसको हायर करना है हमने यहाँ पे ईजिली
वो भी सेलेक्ट कर लिया है. Now the next thing which I am going to do here is to doing a line plotting uh, of day and item. Here now I want to know कि मेरा item per day के हिसाब से कितना ज़्यादा सेल हो रहा है, इसकी क्या डिमांड है. So for this here I am assigning a variable with the name of gender count, sorry, sns dot. Here I'm trying to make a line plot. तो यहाँ पे मैं line plot का नाम दे रही हूँ. In the last one I was trying to do here a count plot. यहाँ पे बस line plot है, तो बस यहाँ पे जो भी ग्राफ बना हुआ आएगा वो line plotting की फॉर्म में बना हुआ आएगा. अब हमने जैसे पीछे अपना डे टाइम फॉर्मेट सब कुछ चेंज कर लिया था, तो मैं डे के हिसाब से मैं यहाँ पे चीज़ें चेक करना चाह रही हूँ. तो फिर एक्स एक्सिस पे मैं डे रखूंगी, एंड नाउ ऑन द वाई एक्सिस हियर आई एम पुटिंग आइटम. हमें ये ऑल डेटा वाले आइटम से निकालना है. ऑल डेटा, हम ब्रैकेट से अपने बाहर आ जाएंगे. अगेन वी आर गोइंग टू गिव अ टाइटल. हम आइटम्स चेक कर रहे हैं यहाँ पे, आइटम्स पर डे के हिसाब से. It will take a little bit time, as you can see. तो हम दिखा दिए कि हमारा जो भी स्टफ़ है, जो भी आइटम्स हमारे पास मौजूद है, ये डे के हिसाब से कितना सेल हो रहा है. लाइक 5th डे को कितना था उसका, 10th डे को उसका कितना हुआ था, 15-20 के मिड में उसकी जो सेलिंग थी वो सबसे वो ज़्यादा हो गई थी. देन उसकी फ्लक्चुएशन आई. तो यहाँ पर जो है डे बाई डे फ्लक्चुएशन आती रहती है, अप एंड डाउन आता रहेगा हमारे आइटम्स में कि वो डे के हिसाब से कितनी होगी. नाउ हियर आई वॉन्ट टू नो द प्रोडक्ट सेलिंग पर आर के एक घंटे के हिसाब से हमारे पास किस हिसाब से सेलिंग्स हो रही हैं. तो उसमें डे में चेंजिंग करूंगी. यहाँ पे आई विल राइट हियर आर. नाउ ऑन नेक्स्ट स्टेप हियर आई वांट टू नो कि मेरा जो भी आइटम है उसमें से किस आइटम की सबसे ज़्यादा सेलिंग है. So for this purpose here I am using here again a count plot. On the y-axis I am putting item data from all data. Dot set. हम सब में टाइटल लेते रहेंगे. हम किस हिसाब से कर रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे चेक करना है भी हमारी किस आइटम की सबसे ज़्यादा डिमांड है. हमारे पास सबसे ज़्यादा डिमांड है बस जंक फूड की डिमांड है, और सबसे कम जो है बस डिमांड है वो स्टफ़ की. उसके बाद थिंग्स, जंक फूड, थिंग्स, विजिट, एंड इन द लास्ट स्टफ़. तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो जंक फूड की. तो हम अपने जंक फूड की साइड पर ज़्यादा वेरिएशंस लेकर आएँ, ज़्यादा ऑफर्स लेकर आएँ, ताकि वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो. और जो हमारे सबसे ज़्यादा कम है स्टफ़, उसमें हम न्यू ऑफर्स लेकर आएँ, उसमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आएँ जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे, जो कि हमारे बिजनेस में विजिट, स्टफ़ और थिंग्स को ज़्यादा कर सके. Now on the next side I want to know कि मेरे जितने भी आइटम्स हैं उनकी प्राइस क्या चल रही है, किस हिसाब से आ रही है. तो here I wanna do the line plotting. On the y-axis I'm putting here item, sorry, with inverted commas, item on the y-axis, and on the x-axis I'm putting here a price, data from all data.
dot set title. I'm giving a title of item price. Oh, it's giving in syntax here. I didn't mention the equals to mark. C1 has no attribute of line plot. I think so. I've done any mistake. Yes, I did a mistake here. I said I wrote plot, and the word is plot. C1 has no attribute line L plot. Okay. हमारे पास जंक फूड की क्या प्राइस है, विजिट की हमारे पास क्या प्राइस चल रही है, स्टफ की थिंग्स ही, इससे हमें सब कुछ ला के दे दिया. इन द लास्ट हेयर आई वांट टू नो द कंपैरिजन बिटवीन द कस्टमर एंड द टोटल सेल अमाउंट, कि कस्टमर्स के हिसाब से हमारी टोटल सेल्स अमाउंट क्या आ रही है. फॉर दिस पर्पज हियर आई एम using a bar plot of C1 library plot. On the x-axis I am putting customers, and on the y-axis I'm putting a total sales amount. Make it sure to write the capital, because in my data the total was written with a capital T. Then syntax error here. All data is not defined. Now what error it gives? Customers. Okay, I see. हमारे पास जो डेटा में कस्टमर है उसमें एस मौजूद नहीं है. Now it will take a little bit time क्योंकि हमारा ये फंक्शन जो है प्रोसेस हो रहा है. Let's wait a while. ऐसे हमें एक आउटपुट दे दिया इन द रिटर्न फॉर्म, अभी भी प्रोसेस हो रहा है. कुछ देर में इसका ग्राफ जो है शो हो जाएगा. जब तक हम एक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने फिर से सबसे अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराई, देन हमने फिर पाथ को यहाँ पे रन करवाया. आफ्टर रनिंग इट हमने सारी फाइल्स को रीड करवाया थ्रू CSV फाइल, एंड देन हमने सारी फाइल्स को ऑल डेटा के नाम से pd.concat का फंक्शन यूज करते हुए यहाँ पे मर्ज कर लिया. एज यू कैन सी द डेटा हियर, हमारे पास जो कॉलम्स थे वो कॉलम से रिप्रेजेंटेटिव, लोकेशन, रीजन, कस्टमर, ऑर्डर डेट, इन सब के नाम से मौजूद थे. बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स हमने यहाँ पे अपनी डेटा में जितनी भी नन फाइल्स थी, जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज जो भी मैं नथिंग जिसका कोई काम नहीं था, हमने उन सबको यहाँ पे देखा. बट खुशकिस्मती से हमारे पास कुछ फाइल नहीं थी, लेकिन फॉर द सेफ साइड हमने यहाँ पर जो है अगर कोई इन केस कोई थी भी तो हमने यहाँ पे उसको ड्रॉप करवा दिया. एंड देन हमने सबसे पहले देखा कि हमारे डेटा जो मौजूद है उसके कौन कौन से टाइप है. तो हमारे ऑब्जेक्ट, इंटीजर, फ्लोटिंग सब मौजूद है. हमने अपने प्राइस और टोटल सेल्स अमाउंट को जो है न्यूमेरिक में चेंज कर दिया. देन आई चेंज माई ऑर्डर डेट इनटू अ डेट टाइम. इन द ऑर्डर डेट आई चेंज माई डे, मंथ, ईयर, मिनट, आवर, एवरीथिंग इनटू अ डेट टाइम. Now as you can see that I have a separate column of day, month, year, minute and hour. Now then I was trying to do the comparison between the region के कौन से region में मेरी सबसे ज़्यादा demand हुई है, and then कौन से उस region का कौन सा location था, like east का कौन से location पे सबसे ज़्यादा, कौन से शहर में सबसे ज़्यादा से मेरे product की demand है. Now अब मुझे पता चल चुका था कि on which side I have to open my new branch, but for the new branch I want someone to handle this. So for this purpose I use a comparison thing, जिससे पता चला कि now I have to select this person, this employee for this new branch.
And then in the next step, I was trying to make a line plot graph, the comparison between the day and item के per day के हिसाब से मेरा item कितना sale out हुआ है, and then next I was trying uh, to see कि item per hour के हिसाब से कितना ज़्यादा मेरा सेल हुआ है. Now I want to know कि मेरा कौन सा ऐसा item है जो कि सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, ताकि मैं उस पर कुछ चेंजेस लेकर आऊँ, और जो सबसे कम सेल हो रहा है मैं उसमें कुछ चेंजेस लेकर आऊँ कि मेरे जो सबसे कम सेल हो रहा है उसकी भी सबसे ज़्यादा डिमांड आए. फिर यहाँ पे हमने आइटम एंड प्राइस का जो है एक लाइन प्लॉट बनवाया कि किस आइटम की क्या प्राइस किस हिसाब से फ्लक्चुएट करी, लाइक जो जंक फूड है उसी की प्राइस सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करी और थिंग की प्राइस जो है कम है. देन एज यू कैन सी हमारा जो है ग्राफ बनकर आ गया है. हमने यहाँ पे कस्टमर और टोटल सेल्स अमाउंट का करवाया था. दैट ये हमारा वो प्रोजेक्ट था जो कि हमने सेल्स डेटा पर परफॉर्म किया. इसकी हमने कोडिंग करी थी और हमने इसकी अभी वीडियो बनाई इसी को लेकर कि हम बस डेटा साइंस किस तरह से हमें बेनिफिट करते हैं, हमें किस तरीके से फ़ायदा देता है, हम डेटा साइंस यूज़ करते हुए है कितना ज़्यादा जो है अपने लिए प्रॉफिट अर्न ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बाय यूजिंग दिस हमें अपने सारी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएशंस क्या चीज़ ज़्यादा है क्या चीज़ कम है सब पता चलती रहेगी. Are my group members. The purpose of this video is to represent my data, how I work on my data, and which codes I use to run this data. First, I'll show you my files. Here I make a folder with the name of video working, and in this folder I have selected only 5 files. I've just selected only 5 files, not the data of whole year. Here we have a file of May, March, Jan and Feb. I'm working on all these files. So first we will open the Jupyter prompt, sorry, Anaconda prompt. In the Anaconda prompt, first we have to copy our address, like where we save our files. We will paste our address there. After entering, we will write here a Jupyter notebook. It will take a little bit time to open.